Welcome to class 10. In this lecture, we will learn about quadratic equation. So, first of all, what is quadratic equation? Quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. This is a quadratic equation. It is quadratic because the variable power is at most 2. If the power in an equation is maximum 2, that equation is called quadratic equation. If we take an equation of the form ax plus b equal to 0, here the variable power is 1. This is called linear equation. And if the variable power is 3 equal to 0, this is cubic equation, and so on. If the variable power is 2, that equation is quadratic, and our topic is quadratic equation. Some examples of quadratic equations are 2x square plus 4x plus 5 equal to 0. Students, look at here. This is called coefficient. Before the variable term is known as coefficient. This is variable, and this is exponent or power or exponent. If we compare this equation with the standard equation, this is our standard equation of quadratic equation. So the coefficient of x square is 2. So a is equal to what? A is equal to 2. B is equal to 4. And C is equal to 5. Our first task is to bring any quadratic equation to standard form, then we will solve it. The solution of quadratic equation is possible on 3 different ways. Students, quadratic equation को हम 3 तरीकों पर सॉल्व कर सकते हैं. जो पहला तरीका है वो है फैक्टराइजेशन मेथड. नंबर सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर. नंबर थर्ड जो है वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. Let's take an example, that is 6x square. Example 6x square plus 12x plus, or take it 7x प्लस 2 कर दें to equal to 0. Look at the equation. This is quadratic, is it not? Look at ax square, bx and c equal to 0. This is quadratic equation and it is in standard form.
Now we can solve it by either of the three methods. So first we will try factorization method, and today we will learn about the concept of factorization. Look at the method. Just write 6x square and 2 on its own place. It will come a same. बाकी जो 7 है उसके साथ हमने एक तरकीब करनी है, एक तरीक़ेकार करना है। 7 को हम दो हिस्सों के सम में लिखेंगे जमा में। ये जो 7 है दो हिस्सों के प्लस में लिखेंगे, ताकि उनको अगर हम ज़रब कर ले तो क्या आएगा, ज़रब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा। यहाँ पर 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है 12। स्टूडेंट्स, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके मल्टीप्लिकेशन से आता है 12। तो हमने 7 को दो हिस्सों के सम में लिखना है जमा में, कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और सम करें उसका तो 7 आ जाए। तो आप सोच ले ये 12 जो है किन दो हिस्सों से आता है, 2 and 6। 2 6 are 12, बट 6 और 2 को अगर हम जमा करें तो इनसे तो 7 नहीं आता, 8 आता है। तो और दो हिस्से देख ले जिससे 12 आता हो, 3 and 4, 3 4 are 12 एंड सम कर ले अगर तो जवाब आता है 7। एग्जैक्टली 3 and 4 इज द रिक्वायर्ड डिजिट्स। 3 + 4 = 7 एंड अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7x की जगह हम लिखेंगे 3x + 4x। यहाँ पर अगर आप लोग 3x बाद में लिखे 4x पहले लिखे कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 6x। अब अगर देख ले तो ये 4 टर्म्स बन गए हैं, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 and 4। तो आप दो दो टर्म्स ले ले, उनमें से कॉमन ले ले। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो ये 3 2 6 है और ये 3, तो 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी। तो हम 3x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बाकी क्या रह गया, 2x। 2x मल्टीप्लाई करें दोनों को तो 6x स्क्वायर आता है, दरमियान में प्लस है और 3x हमने कॉमन दिए हैं तो यहाँ पर एक रह गया है प्लस। व्हाट इज कॉमन ओवर हेयर, जस्ट 2 इज कॉमन, 2x + 2। रिमेंबर दिस, if we take the common, the remainder term should be equal। ये दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर 2 कॉमन हो गया तो ये 1 आ गया यहाँ पर। ओके, तो अगर अब हम यहाँ पर 2x + 1 कॉमन ले लें तो क्या रहता है, 2x + 1, ये दो टर्म हो गए, एक टर्म ये एक टर्म ये। 2x + 1 taking common from here and here, just remaining is 3x + 2, because ये 2x + 1 कॉमन हो गया है, बाहर लिख गए और = 0। अब देख लें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टर्म्स = 0। दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है तो पॉसिबिलिटी क्या है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो पॉसिबिलिटी इनमें से है कि या तो दोनों सिफर है या इनमें से एक हाँ सिफर है। तो हम लिख सकते हैं कि 2x + 1 = 0 और 3x + 2 = 0। अब इसको कंसीडर करें तो क्या लिख सकते हैं, 2x + 1, ये 1 को अगर राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये -1 हो जाएगा और ये 3x 2 को शिफ्ट करें तो -2 हो जाएगा। अब डिवाइडिंग बोथ साइड विद 2, डिवाइडिंग बोथ साइड विद 2, व्हाट वी गेट, x = -1/2। This is one answer। And next, dividing both side with 3 = -2/3,
3 is cancelled with 3. So our answer is x is equal to minus 2 over 3. We have two answers. X is equal to minus 1 over 2 and minus 2 by 3. It is quadratic equation, so the quadratic equation must have two answers that may be equal or different. So quadratic equation having two answers. It is, remember, consider another simple example, that is 6x square plus 9x plus 2 और 3 कर ले 3 equal to 0. This is a quadratic equation. Now we want to solve it by factorization method. So the method is very simple. Just writing 6x square plus 3 equal to 0 and searching for two terms that sums 9 and whose multiplication is what? The multiplication of 3 and 6, which is 18. Now we will search for two terms which we add, the result give us 9 and अगर हम उसको ज़रब दे दें तो उससे 18 आ जाए, तो वो दो नंबर 6 प्लस 3 ऐड कर ले, 9 आ गया, मल्टीप्लाई कर ले 18 आता है, तो हम लिख सकते हैं 6x प्लस 3x, 9x की जगह हमने ये लिख लिया. आप पेयर्स कर ले तो टेकिंग 6x कॉमन वी गेट x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन कर ले तो x प्लस 1 आता है. आप देख ले यहाँ पर ये सेम है, तो टेकिंग इट कॉमन 6x प्लस 3 equal to 0. Now the multiplication of two term equal to 0, that is x plus 1 equal to 0 or 6x plus 3 equal to 0. Now shifting 1 to the right hand side, that is minus 1. One answer is minus 1. The another one is 6x, shifting 3 to the right hand side. Now dividing by 3 by 6. Sorry, minus 3 by 6. This is cancelled with this. Our result is 3 1s are 3, 3 2s are 6, minus 1 over 2. So we get two answers, that is minus 1 and minus 1 over 2. So the solution set is minus 1 over 2, our two answer. So factorization method is very simple. You just look at here, just writing 6x and 3 on its own places, shift it to down. और करना क्या है कि ये जो x वाला टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है उसके हमने दो हिस्से तलाश करने हैं कि सम से 9 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से इस इनसे का और इन इनसे का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाए, और बाकी जो मेथड है वो बाकी बिल्कुल सिंपल है. आप इस पर ट्राई कर ले, एक दो क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर ले. अगर कोई इसमें मुश्किल हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, वो आपके लिए सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में हम और दो मेथड्स भी सॉल्व करेंगे, और कोई मुश्किल क्वेश्चंस हो तो आप कर ले, वो भी सॉल्व करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.